Hello everyone, this is Ashish Asthana. I welcome you all in my channel. Today I'm going to show you, the very basic Power BI visualization series item, which is bar chart and the column chart. So when we talk about Power BI, so the bar chart is the first and the simple thing that comes into the mind. So I'll show you how to create a bar chart, how to make it lucrative, how to format it, and how to make it to the next level. So jump on my Power BI file. So today's topic is bar chart and the column chart. So if you see in the visualization pane, you will find these pretty small icons of Power BI visualization visuals, which is Power BI inbuilt visual. There are lot more you can get it from Power BI portal. Some are certified, some are not certified. So Power BI bar chart and the column chart are the very basic visualization. If a person does not know anything, he can also understand by looking at your graphics what exactly you want to show. So without wasting time, we'll go and start create graphics for bar chart and the column chart. So the use case for this graph is and the chart is when you need to create a bar chart or column chart or any other chart, for example. So bar chart is used when you need to show, the comparison of some category over a period of time, right? For example, you are getting there is some sale and in a periodic manner. For example, 2014, 15 year wise, and you have to show that sale in the form of year. So for that, you need to use bar chart or maybe column chart. This is very simple definition, but in its interview also, the interviewer asked when a chart is created. So you should know when a particular graph and chart is created. So let's jump on my. Let's start creating the visual. So this is a donut chart, which is I'm going to first of all I'm going to delete these two, which is not needed. This one I'm going to change into bar chart. So if you see and hover your mouse here, you will find the bar chart. And why it is said as bar chart, because if you click on here, so it will create a bars. You know, these are the horizontal bars. And what is a column? So if you go and click on this particular place, you will find a column. So these are the standing pillars for a graph. Okay, so that is why the difference between the bar and column is bar is horizontal and the column is vertical. And let me quickly format it. So if you see the color of the axis are not pretty clear here. Okay, so I will go on y-axis and fix it for this. And if you see, these are the y-axis. The down one is the x-axis. So I'll go quickly on x-axis, please, and will select my value, and the value is white. You see, so it got changed. There were also some labeling is there in y-axis. So if you go on the title, so you'll also find why. So you saw the country is also changed into white. In a similar way, we can also go and fix the title for you know x-axis. So you see, yeah, that's one thing. In a similar way, I will do it for my column chart and the values for this. So that's how you get and then x, it was the x-axis. I'm going to fix the y-axis, please.
So we see that. Okay. Okay, so cool. Now, one more thing I need to fix is looks like it is not clear. Now it is clear. Okay. 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 Coming back on bar versus column. So the bar is of two types. One is stack bar. Another is the cluster bar. Okay. So what is the stack bar, and what is the cluster bar? So let me make a copy of this and put it here. And in a similar way, I will make a copy of this column chart and put it here like this. So what is a stack and what is a cluster? So stack is something, you know, a heap or a kind of for example, if you have seen the bunch of currency notes, so they are pretty grouped into one a pile or a heap of currency notes. Okay. And this cluster is something which is scattered, which is not upon one. Okay. So this is a bar chart, and the form is a stack. And if I need to create a stack, sorry, cluster chart, so I need to select cluster bar chart. So you will not see a difference here until you take a legend here. So legend is something a different category. For example, I want to see the you know year wise value here, and in this similar way here also I will put it year wise. So legend is here, but you see the it is not showing. It is showing actually, but the color is blue. So let me fix the color for that. So the bar and the color is dark blue, make it white. You see the similar way. So you said difference here. Now you can come to know the difference. The difference is this is in a single line, and this is a different line. Okay, so as per your need, you can choose what is needed. Coming on column chart. So the same thing we can apply in column as well. So this chart we can make it a column, and let me grab the category, the legend of years here as well, legend of years. And as I mentioned earlier, since we are using a dark theme, so it is not making it visible. So I need to fix this one quickly. So you see that my columns are on not pretty visible. So that's one thing we can do. Okay. Then if you come on this category, so I explain you about y-axis, x-axis formatting, the legend part. Legend is something that it tell you this is the legend. The year is legend, right? So it makes the difference. So if you want to put in the top corner, so it will be in top corner, and then center right. So center right is there. So you can choose wherever you want to place it. Okay. And if you want to format the text, so it is white as of now. If you want, so you can also make it a bit change like this. And if you want to format the title, so the title name is here. This is legend title. Okay. So yeah, you can make it anything here. Then zoom slider is something which if you add in your particular graph, it will allow you to just zoom it you know the way you want it. So until 20 million. Okay. That's how it is. So it's not needed now. Then I'll go with data label first rather than bars. So data labels, if you allow data labels, so you see there are number mentioned here. Okay. Then since this is a white, so but number is not visible. So let me do one thing. Let me you know do the setting for here. So as I mentioned,
I need to fix this one. So the bar color was white. So let me make it a bit different color so that I can be able to see the values. Okay, you see the values here, and a similar way, we will see the value here. So you see, if I'm selecting only one graph, and I can able to change the property for other graph as well. I have the same property value because this is coming from the same category. That's how. Okay. Now, so we learn the formatting of the bar chart. So the reverse stack order is something we'll explain later on. So the bar is there. Now, data label color you can change, and there are multiple options. What position you want to put it. So, for example, if you want to say outside and inside center or outside end, so it will go like that. See that? So let it be auto mode, and there are lot more settings. Bars, we understood how the bar can be changed. One thing I would like to tell is that if you want to conditionally modify the bar, for example, let me do it right now. So let me delete this graph here, the ear piece. Now you can see there are some change values, and now I want is मेरी जो कैटेगरी जो ईयर है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कनाडा का ईयर लिया होगा या फ्रांस, तो यहाँ पे देखोगे कि सेल दे रखी है 11 मिलियन 12 मिलियन या इसका था. आई वांट टू स्टैब्लिश ए कैटेगरी, सो लेट मी शो यू हियर. व्हाट आई वांट इज कि 5 मिलियन की अगर मेरी 5 मिलियन की अगर रेंज है मेरे सेल की, सो उसका कलर कुछ और हो. 5 से 10 मिलियन हो तो उस बार कलर कुछ और हो, और 10 से ज़्यादा हो. तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैं इम्प्लीमेंट करना बता रहा हूँ आपको कैसे कर सकते हैं बार्स के अंदर. सो आप देखोगे तो एफ एक्स का एक ऑप्शन यहाँ दिखाई पड़ेगा. एफ एक्स मतलब होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप अलाउ कर सकते हैं इसके. सो अब मैं जाता हूँ एफ एक्स के अंदर, और मेरा गोल क्या है मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मैं इसको कैंसिल करता हूँ. अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें ली हुई हैं, दो आइटम लिए हैं. एक है कैटेगरी, एक कंट्री, दूसरा है सम ऑफ द सेल. ओके, सो कंट्री एंड द सेल पीस. ओके, हियर इट इज सेलेक्टेड. नाउ अगर मैं अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो अपने सेल के हिसाब से इन बार्स का कलर चेंज हो जाए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है. और ये रिक्वायरमेंट आपको मिलती रहेंगी जब आप पावर बीआई पे काम करना शुरू करोगे या आपको प्रोजेक्ट मिलेगा. ये इट्स वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट. तो यहाँ पे रूल आपको मिलेगा, एक रूल. ओके, इस रूल में क्या है कि आपने आपके टेबल का नाम है माई टेबल, तो आपने माई टेबल यहाँ पे ले लिया और आपको वैल्यू प्ले करनी है सिलेक्ट सेल्स के ऊपर. तो सेल्स का जो सम है उसके ऊपर आपको अपनी वैल्यू पुल करनी है. यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, और मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 5 मिलियन के ऊपर का है. सो 60. ओके, 5 मिलियन से ज़्यादा है, और अगर वो मेरी वैल्यू 10 मिलियन से कम है. 10 मिलियन 560. मेरा जो कलर है वो मेरी जो सेल सेल थोड़ी सी मेरी कम है. ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सेल लाइट पिंक रहे. एक नया रूल. अब मेरी अगली जो रूल है वो ये कहता है कि मेरी सेल 10 मिलियन से तो ज़्यादा हो, और 15 मिलियन से कम हो. 15 मिलियन से कम हो. ओके, ये मेरी दूसरी है रेंज. तो ये हो जाए मेरी थोड़ी सी डार्क पिंक. और एक लास्ट रूल है कि अगर मेरी सेल 15 मिलियन से ज़्यादा हो जाए, 1 2 3 नंबर में,
और ये हो जाए मेरी मैक्स, मैक्स कर लो। ठीक है, तो ये हो जाए मेरी डार्क। ये रूल मैंने डिफाइन कर दिए हैं, 5 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से 15 मिलियन और 15 मिलियन से ज़्यादा। मैं ओके करता हूँ, तो आप देखोगे कि ये इनके कलर चेंज हो गए। अभी यहाँ पे 5 मिलियन का कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्री लेता हूँ, तो ये तो सेल काफ़ी कम हो गई है। अभी मैं कैटेगरी बनाता हूँ लेस देन, वो बना सकता हूँ मैं उसकी भी। और व्हाट आई कैन डू, सेल को मैं लेता हूँ, ये देखिए। तो ये इस तरीके से हम कंडीशनली इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स वन थिंग। सो ये अब मैं इसको ले लेता हूँ अपना ईयर लेजेंड पे। ठीक है, सो ये होता है बार चार्ट और कॉलम चार्ट। द सेम थिंग वी कैन अप्लाई हेयर एज वेल। जब हमें हॉरिजॉन्टली दिखाना होता है किसी वैल्यू को, तो हम इसको दिखाते हैं। और एक चीज़ और भी है, आप इसके ये जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपको यहाँ पे प्रिटी विजिबल नहीं है, ये चीज़ आपको प्रॉपरली दिख नहीं रही है, तो आप यहाँ पे आके आप इनको चेंज कर सकते हैं। जो इनकी रेंज है अगर आप देखेंगे, तो जैसे कि आपने देख रखा है यहाँ पे, ये जो चीज़ है आपके पास, आप इसके वैल्यू को मोड, ये जो कॉल बार है, आप इनको भी थोड़ा सा इनके साइज को आप क्लियर कर सकते हैं, हाइट इनकी देख सकते हैं। और उसके अलावा आप यहाँ पे ये, हम एक्सिस में भी छेड़खानी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रिवर्स स्टैक ऑर्डर है, तो आप अच्छा ये वाला बार सेलेक्ट है। ये देखिए स्विच एक्सिस पोजीशन, मैं इसकी बात कर रहा था। स्विच एक्सिस पोजीशन क्या होता है कि आपकी जो एक्सिस है इनकी पोजीशंस को आप स्विच कर सकते हैं। तो आपका जो पहले इधर था वो इधर चला गया, जो इधर था वो इधर आ गया। सो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई खास मैं अभी तक देखा नहीं है। और सो इतना ही है आई थिंक। और इन्वर्ट रेंज आपको एक अलाउ करता है, जिसमें आप अपनी वैल्यू को इस साइड कर सकते हैं। देखिए आप किस तरीके से आप आपने चार्ट को पूरा सा घुमा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सो गाइस ये है हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको शो किया है कंपैरिजन बिटवीन बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट। आई होप को समझ आया होगा कि बार चार्ट क्या है एंड कॉलम चार्ट क्या है, इनका यूसेस क्या है, इनकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कितना आसान है इसको लेना। इसके अलावा आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं बाहर से, तो आप इंपोर्ट अ विजुअल आप डाल सकते हैं फाइल में अगर आपकी है कोई। या अगर आपको और विजुअल चाहिए, आपको पावर बीआई का जो प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है या विजुअल स्टोर है, आप वहाँ जाके भी इनको ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे एक बार क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा स्लो है। सो यहाँ पे आपको पावर बीआई के और भी विजुअल मिल जाएंगे अगर आप डालोगे यहाँ पे बार चार्ट। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे एनिमेटेड बार चार्ट है, गैंट चार्ट है, हिस्टोग्राम चार्ट है। आप ये ले सकते हो। हम मैं इसके ऊपर और भी वीडियो मैंने बनाने हैं मुझे, वो आपको मेरे आने वाली वीडियो में दिखेंगे। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिंबल दे रखा है, टिक टिक मार्क है, ब्लू टिक, और बाकियों के आगे नहीं है, इसके आगे नहीं है, बट इसके आगे। तो ये पावर बीआई सर्टिफाइड है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एनिमेटेड बार चार्ट या ये जो बार चार्ट है, ये आपके पावर बीआई की रिपोर्ट को स्लो कर देंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड नहीं है, जबकि ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है। सो आपको अगर कभी यूज़ करना है, तो आप हमेशा माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड विजुअल ही लें। ये जो है आपकी परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज today's video guys, and keep watching more. Thank you so much.